Assalamu alaikum warahmatullah. Today is a new video lesson, a short tutorial about MS Excel shortcut keys, and in this lesson you are going to learn how to copy and paste the text with the new trick or shortcut key. इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह आपने जो है ना कॉपी पेस्ट करना है नए ट्रिक के साथ। नॉर्मली जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो फर्स्ट आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह, और फिर राइट क्लिक कर देते हैं राइट बटन के साथ, और यहाँ पर आ जाते हैं कॉपी पर क्लिक करते हैं। कॉपी पर क्लिक करने के बाद फिर किसी और जगह जाके आप उसको दोबारा माउस के लेफ्ट राइट बटन पर क्लिक करके पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। नॉर्मली व्हेन यू कॉपी और पेस्ट द टेक्स्ट, यू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, देन कॉपी इट एंड अगेन राइट क्लिक and press click on the paste option, and your data is copy or pasted on another place or cell or a column. Here now you see it is placed on the different place. Another short key or trick is to do that. इस काम को करने के लिए एक और तरीका है कि किस तरह आपने कॉपी पेस्ट करना है टेक्स्ट और डेटा को। Another way or short trick is to, if you want to copy or paste the text, suppose you want to copy something from this data, you have to click here, and after clicking press Alt plus down arrow key. By pressing Alt plus down arrow key, you are watching all the data that is written in the first column. You can select from here anything. All the data names are beneath that column, and suppose I select this one, shampoo, and here is added. And this can be done in anywhere, but this short key or trick is only meant for the text, not for the numbers. कि ये जो आप कर रहे हैं कॉपी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें जो आप कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे वो आपका टेक्स्ट वर्ड्स होंगे, ना के नंबर। देखिए यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, और इनके अगर मैं Alt प्लस डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर वो डेटा जो है नीचे आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने Alt और डाउन एरो की प्रेस की है तो यहाँ पर वो आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रिक है शॉर्ट की है ये सिर्फ वर्ड्स के लिए, नंबर्स के लिए नहीं है। दिस शॉर्ट ट्रिक इज ओनली मेंट फॉर द वर्ड्स, नॉट फॉर द फिगर और नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने वर्ड्स को, डेटा को जो है कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस शॉर्टकट ट्रिक और शॉर्ट की। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आएगा, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये लेसन और शॉर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था। डू वॉच, लाइक एंड कमेंट, subscribe my channel, and do give your precious feedback on this channel to make it more useful for the people around the world. Thanks for watching. Thank you.